Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. Well, I am Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा नेजा डैंग। Thank you, Vishal. Yes, we begin with the headlines. Indian horticulture production hit highest ever level of over 350 million tons in 2022-23, says Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar. Pharmaceutical industry turnover of the country increases over 3.44 lakh crore rupees in 2021-22 and domestic stocks close almost flat. कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, वर्ष 2022-23 में देश का कुल बागवानी उत्पादन अब तक का सर्वाधिक 35 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान। भारतीय फार्मा उद्योग का कारोबार 2021-22 में बढ़कर 3,44,000 करोड़ रुपए से अधिक हुआ और घरेलू शेयर बाजार बिना किसी बड़े उतार चढ़ाव के सपाट हुए बंद। शुरुआत कृषि उत्पादन से संबंधित खबर से करते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सब्जियों के दाम आपूर्ति में कमी के कारण नहीं बल्कि जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण बढ़े हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि भारत विश्व में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सब्जियों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। कभी कभी कीमतों में उतार चढ़ाव मुख्य रूप से बेमौसम बारिश, गर्मी और अन्य जलवायु संबंधी आपदाओं के कारण आपूर्ति में व्यवधान के कारण होता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में देश का कुल बागवानी उत्पादन 35 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान है, जो अब तक का सर्वाधिक है। और इस बारे में हमारे साथ आज चर्चा के लिए कार्यक्रम में जुड़े हैं आर्थिक विशेषज्ञ जयंता दास। जयंता दास जी, कृषि मंत्री ने जो आज लोकसभा में जानकारी दी है कि 35 करोड़ टन से अधिक होने का अनुमान है 2022-23 में देश का कुल बागवानी उत्पादन, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मान रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, हम लोग फूड ग्रेन्स को हमेशा चेस करते हैं और करना भी चाहिए बिकॉज फूड सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है फूड ग्रेन प्रोडक्शन। लेकिन काफी सारे हमारा श्रोताओं को पता नहीं, काफी सारे लोगों को ये नहीं पता। अब जैसे आपने खबर में भी सुना है कि चाइना के बाद इंडिया लार्जेस्ट है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में, खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। और इसके लिए मैं एक और अच्छा आंकड़े में बता रहा हूँ आपको, जहाँ पे नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ये भी बहुत एक महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि भाई एक हेक्टेयर में कितना टन उत्पादन होते रहते हैं। और इसमें भी हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में भी देयर इज बीन अ ह्यूज जंप प्रोडक्टिविटी में, जहां पे करीबन जो आंकड़े मेरे पास है 8.8 टन प्रति हेक्टेयर से 2001-2002 में, मतलब 20 साल के अंदर ये प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 50% बढ़ के 12.1 टन पर हेक्टेयर हुआ है। तो मौजूदा हालात में एक तो देश के लिए बहुत अच्छी बात है बिकॉज एक आपके लिए बहुत अच्छा एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी का मार्केट ओपन होता है हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन का द्वारा। और दूसरी बात यह है कि देश में हमेशा ये चर्चा रहा कि मूल तौर से जो कृषि क्षेत्र के ऊपर निर्भर करते हुए जो राज्य है, उनका हमेशा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर जो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर फोकस रहते हैं। ये हमें समझना चाहिए कि अगर आप डाइवर्सिफाई करें प्रोडक्ट्स, और जैसे अभी आंकड़े का थ्रू हमने बताया, आपने भी आंकड़े का सहारे में जो अभी बातचीत इस वक्त सरकार ने अलग से घोषणा की पार्लियामेंट में कि डाइवर्सिफाई करते हैं अगर उत्पादन कृषि क्षेत्र में और खास करके हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में, तो यहाँ पे आपका रोजगार में भी बहुत अच्छा वृद्धि हो सकता है।
तो ये सारी चीजें देखने का निर्भर हमें करना चाहिए, हमें समझना भी चाहिए। डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं, लेकिन जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, शुगर प्रोडक्शन बहुत सेंसिटिव है हमारा इंडिया में, बिकॉज ये नियंत्रित है अभी भी, और पॉलिटिकली इसमें बहुत ज्यादा आपका रोल रहता है। हम सबको पता है कि शुगर लॉबी के द्वारा राज्य में इलेक्शन जीता या हारा जाता है। एशिया क्षेत्र में भी लोग कोशिश करते हैं कि शुगर का लगातार शुगर केन प्रोडक्शन करते रहे, बिकॉज एज पर रूल्स आप कुछ भी शुगर केन प्रोड्यूस करेंगे, मौजूदा जो मिल है उसको आपको खरीदना पड़ेगा, चाहे कुछ भी दर। तो ये जो एक तरफ से जो स्क्यूड होकर रखा है, जहाँ पे किसान भाई हम लोग का जो कोशिश किया जाता है कि भाई जहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो, या जहाँ पे आपका नीतिगत रूप से सपोर्ट मिलता है। हालांकि शुगर हम सबको पता है सॉइल के ऊपर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस फैक्टर है इन टर्म्स ऑफ वाटर यूजेज और। तो यहाँ से हटके डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें तो जहाँ पे आपका रोजगार भी काफी अच्छा है और नीतिगत रूप से जिस तरह का सपोर्ट सरकार का तरफ से मिलते हैं, उस रोजगार में आप और वृद्धि भी आप पा सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ऐसे चीजों का प्रचार अच्छे से होना चाहिए और सरकार का द्वारा हो भी रहे, और आम जनता को भी ये समझना चाहिए कि देश में फूड सिक्योरिटी के साथ साथ खास करके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के उत्पादन में इस तरह का वृद्धि पाना भी बहुत अच्छी बात। Gentle, for the Green Revolution brought predominance of paddy and wheat over other. In fact, even at the cost of millets, which now we are going back to after the Prime Minister's intervention, that we must promote millets. This biodiversity that you talked about not only helps in employment but also helps the soil retain its nutrients and nutrient value. Do you think the mushrooming of the private sector in the distribution of fruits and vegetables has encouraged its growth in this sector? See, there is always, as I said, in the agricultural line specifically, there has been too much dependence on government always. Mm-hmm. As a result of which, obviously, government has its own challenges, despite the fact that government has a huge, immense resource in terms of buying and distributing through whatever corporations it operates on. So there is no taking away from there. Now, specifically when we speak of vegetables and fruits, or even in the horticulture sector, you have, garlic, you have ginger and all. A lot of people don't know. For example, Bangladesh, they import a huge amount of ginger, for example, from India. Oh. Almost 4 times than what their domestic requirements are in that sense. Mm-hmm. So these products, they need a good distribution resource, and more than that, they also need a good storage resource. Now, government obviously has for years followed a long-run focus in terms of a storage policy and cold storage policies and things like that, which have worked in many cases, but we couldn't scale up to the level at which we would look forward to if you compare ourselves with our Southeast Asian counterparts, for example. Mm-hmm. Moving slightly away from horticulture, for example, in floriculture, there is a huge flower market to focus globally. For example, one single country by the name of Taiwan is a dominant player, for example, in orchids globally, followed very closely by Thailand. Now, a lot of people don't know, a lot of Taiwan's packaging and all is what took Taiwan to these levels in terms of orchid production. And it's not just the government policy. So, as I said, the importance of the private sector contributing to the growth of these sectors is a very critical pillar. And in addition to that, obviously government policies do have to have come in. But then, as I said, as an export opportunity, this is something which we can surely look forward to and drive further from here. But without the infrastructural support, which we require domestically in terms of not only storage, but also in terms of taking off these goods in a timely manner from our airports and ports, it's something which is a critical factor. Correct, because they have a very, very short shelf life. All right, let's move on to our next story on pharmaceuticals. Well, the Indian pharmaceuticals industry turnover has increased from 2.26 lakh crore rupees in 2017-18 to over 3.44 lakh crore rupees in 2021-22. This information was given by the Minister of State for Chemicals and Fertilizers, Bhagwant Khubba, in the Rajya Sabha today. In a written reply, he said that the Indian pharmaceutical industry is the third largest by volume and 13th largest by value in the world.
Indian pharmaceuticals produce more than 60,000 generic drugs across 60 therapeutic categories. Mr. Koba said in order to encourage domestic manufacturing of pharmaceutical drugs, including generic medicines, the government has launched 2 production-linked incentive schemes. We have been doing very well in pharmaceuticals, Jayanta, and we know that generic drugs has been our forte because the branded ones become very expensive, especially for the developing nations. What is your view on this, and how do you see the pharmaceutical industry, which way it should go? Because I know we all know that during the COVID period we did very well. We know our great vaccine success story and so on. Well, obviously, I mean, COVID was a really extraordinary situation which, came in for 2.5 years, had its ripple effects, was extremely positive for our domestic industry and specifically for 2 or 3 companies which focused on that. But obviously, pharma has a much more broader story, and not limiting ourselves to the COVID period. Even on an average scale, if we take independent reports like ICRA and all, they speak of 7 to 9% growth for the pharma industry, taking into account around 5 to 6 top companies in India, which have got dominant domestic markets as well as dominant US markets to focus to. You are completely right. India is one of the kings of generic pharma industry in the world, and as a result of which we have very huge markets in Africa too. Yes. Because of our call it a strength, call it an edge in producing generic drugs. Having said so, the industry still is under a lot of regulatory issues which the government obviously is trying to sort it out in terms of making it easier for them to operate on all. But these are strong industries, deep-rooted industries, and they have extremely well-defined markets. Not only in a domestic sector, when I say regulatory, people should not think it's regulatory in India per se. We all know, both in Europe and US, there is a constant watchdog for Indian drugs which are being sold there. And there are a lot of, these regulatory hassles. There are a lot of cases, there are a lot of challenges which they face in the local regulator markets over there, the US markets and all. So that's a constant challenge. But as I said, despite that, finally, the customer is the king and price is an important factor. So long as, the regulatory part doesn't throttle the industry, I think Indian pharma industry, once again I'm repeating, regulatory part in global markets, not in Indian markets per se, that's it. We do have a very, very good opportunity going from here, specifically given the deep-rooted foundation of the Indian pharma industry. All right. रुक करते हैं अब अगली खबर का. Yes, let's go to UAE. Well, the UAE Minister for Foreign Trade, Dr. Thani Al-Zeoudi, has been elected as the chair of the World Trade Organization's 13th Ministerial Conference that will be held in Abu Dhabi in February 2024. The announcement was made during the WTO General Council in Geneva, where Dr. Al-Zeoudi met with the WTO Director General, Ngozi Okonjo-Iweala. The conference will be attended by representatives from 164 countries and customs blocks that make up the WTO. और अब बात शेयर बाजारों की. वैश्विक शेयर बाजारों से प्राप्त मिले-जुले संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार आज बिना किसी बड़े उतार चढ़ाव के साथ सपाट बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 29 अंक गिरकर 66,356 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8 अंक बढ़कर 19,681 पर बंद हुआ. व्यापक बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.39% चढ़ा और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.31% की बढ़त के साथ बंद हुआ. Key domestic indices today closed almost flat amid mixed cues from global share markets. The Sensex at the Bombay Stock Exchange ended at 66,356, falling 29 points. Divergently, the Nifty at the National Stock Exchange added 8 points to settle at 19,681. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.39% and the small-cap index gained 0.31%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 13 firms appreciated while 17 declined. JSW Steel and Tata Steel both climbed 3.3% and NTPC gained 2.5%. On the other hand, Asian Paints slumped 4%, ITC declined 1.9% and Larsen & Toubro fell 1.7%. In sectoral indices at the BSE, 14 sectors logged gains while 7 witnessed losses. Utilities sector index advanced 3.4%, metal gained
2.9% and power index rose 2.7%. On the other side, the FMCG index declined 0.8%, capital goods fell 0.6%, and realty index slipped 0.4%. The overall market breadth was negative as shares of 1,808 companies declined and 1,731 companies advanced. A total of 140 shares remained unchanged. Jayanta, fall of the Sensex by just 29 points, does it merit a comment there? Well, see, obviously, the Sensex story has had a brilliant run, as I told you when we were in discussion last week on Friday. Yes. And obviously, there would be some, settlement happening in terms of the market stabilizing from these levels. Today, there was obviously not much movement despite a fairly volatile day. And to sum it up, today we saw both the metal stocks as well as the auto sector stocks driving up, which I think to some extent provided the cushioning effect in bringing in some stability in the Sensex. But it's important to understand two things. One is tomorrow we have the FOMC conference post the meeting, which is happening today and tomorrow in US about the Fed rate. There are various calls which always happen, and there is a strong expectation, almost 98% probability that the Fed rate would be increased by 25 basis points. Going to see the highest ever in the last 22 years in terms of rates. It's not that the market is going to get surprised, but obviously, while in June, FOMC put in a pause to the rate hike, this time it will be a bit different. So we need to see post that how the market reacts. So, as I said, it's not going to be coming in as a shocking surprise, but at least it's certainly a departure from a pause to once again coming back to the rate hike. And as I said, inflation, though, has lowered down to below 3% levels, is still above 2%, which is the Fed benchmark rate, to consider as, a manageable inflation level. So that's one part which is going to impact on us globally in terms of how the stock markets continue from here. Domestically, obviously, they will be driven, as I said, by some profit booking at these levels. And this is also earnings season, so there would also be milestone-based announcements of companies, Sensex-heavy companies, even mid-cap stocks which are followed very closely, which can impact the overall buying and selling proportions. But as I said, these levels are not really sustainable levels, but we would like to see some sort of a settlement happening in the, say, 64,000-65,000 levels, which would be actually good for both the investor as well as the stock market to consolidate at a particular level and then have its next run. जी जयंत, तिमाही नतीजे भी अब आने शुरू हो गए हैं कंपनियों के, और जैसे कि आज भी हमने देखा कि टाटा मोटर्स के और ऑटोमोबाइल सेक्टर की कुछ कंपनियों के नतीजे आए हैं। क्या लगता है आपको कि ये तिमाही नतीजे भी बाजार में इस सप्ताह कम से कम कुछ तेजी ला सकते हैं? देखिए, ऑटो क्षेत्र में तो हम सबको पता है नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, और खास करके मेटल्स क्षेत्र में चाइना ने अनाउंस किया है कि उन्होंने स्टिमुलस जारी रखेंगे पोस्ट कोविड सेशन में टू कीप अप द इम्पेटस ऑफ इंडस्ट्री ग्रोथ, जिस वजह से ग्लोबली मेटल्स के ऊपर एक अलग से बुलिशनेस नजर आया हुआ है, और जिसका दौर हम इंडिया में भी देख पा रहे हैं। इंडिया में पर से डोमेस्टिक सेक्टर में खास करके ऑटो में 4 पहिया वाहन में या 2 पहिया वाहन में जिसका भी बात करें, एक मौजूदा डिमांड अच्छा खासा है, और it's a consistent demand which is rising and increasing. So as I said, it's something good for the industry, especially we saw so much of bloodbath during the COVID days. जी, आईटी कंपनियों का जो पहली तिमाही के नतीजे हैं वो प्रदर्शन कुछ नरम सा दिख रहा है, अनिश्चितता बनी हुई है। क्या आप आगे आने वाले 3 महीनों में या 6 महीनों में, अगले 2 तिमाहियों में आईटी कंपनियों का प्रदर्शन आप कैसा देखते हैं? देखिए, आईटी में इस वक्त मूवमेंट हम बेशक ज्यादा बिल्कुल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है बेलवेदर इन्फोसिस ने भी गाइडेंस जो दिए है, काफी उन्होंने स्लो डाउन का बात कर रहे हैं अगले 3 से 6 महीना। उन्होंने ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स के बारे में बात की है, और मूल तौर से मैं मानता हूं कि विदेशी बाजारों में फेड का जिस तरह का ब्याज दर के ऊपर जो एक मतलब फोकस है, और जिसमें इस वक्त मतलब पॉज का भी बात नहीं किया जा रहा, फिर से दोबारा दौर होगा, तो ऐसे सिलसिले में अगले 2 तिमाही, 1 तिमाही को अगले 2 तिमाही तक मैं कुछ खास आईटी क्षेत्र में उम्मीद नहीं कर रहा हूं ग्रोथ हो। लेकिन ये कहते हुए मैं मानता हूं कि कुछ बेलवेदर स्टॉक्स आईटी क्षेत्र में अगर आप थोड़ा सा और इंतजार करें
प्राइस अर्निंग्स वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत और जब नरमी आए तो बेशक आप उसको एज अ लॉन्ग टर्म 2 से 3 साल का अवधि लेके बेशक इस स्टॉक्स में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट या मीडियम टर्म में आईटी स्टॉक्स में खास करके मेरे को कुछ मूवमेंट नजर नहीं आता। जी, और एफआईआईज के लिए इंडियन मार्केट्स, घरेलू बाजार, भारतीय बाजार क्या अभी भी बहुत आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं? ये इन्फ्लो जारी रहेगा जैसा अभी चल रहा है? ये जैसे मैंने कहा कि इसमें में कोई खास फर्क शायद थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म चेंजेस बेशक हो सकता है। अगर विदेशी बाजारों में ब्याज दर का वृद्धि हो तो यहाँ पे थोड़ा बहुत रीएलोकेशन ऑफ एसेट्स वगैरह होंगे, लेकिन लगातार अगर आप पिछले अगले 6 से 9 महीने का बात करें, यानी कि इस वित्तीय साल का आने वाला 2 तिमाही का अगर बात करें, तो मैं मानता हूँ एफआईआईज का ब्रॉड बेस ट्रेंड रहेगा एज इन्वेस्टर्स, अनलेस समथिंग ग्लोबली हैपेंस इन टर्म्स ऑफ कुछ एक जियोपॉलिटिकल डिजास्टर हो या कुछ एक ऐसे घोषणा हो जहाँ पे कुछ कहीं पे क्रैश होता है मार्केट पे, एक मेजर रीएलोकेशन का जरूरत होता है। लेकिन मौजूदा स्थिति में स्टेटस को अगर मार्केट में रहता है इस वक्त ग्लोबली, तो मैं मानता हूँ कि अगले 6 महीने में एफआईआईज विल रिमेन एज अ नेट बायर और इन्वेस्टर। जी, और क्रूड ऑयल की कीमत जिससे तेजी जो दिखाई पड़ रही है हमें, क्या ये भी बाजार की दिशा तय करने में कुछ भूमिका निभा सकते हैं? देखिए, कच्चे तेल का जो कीमतें हैं, मैंने पिछले हफ्ता भी बताया था कि इसमें नरमी का उम्मीद ज्यादा हम रख रहे हैं। वजह इसलिए क्योंकि अगर मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स का बात किया जा रहा है, अगर ये कोशिश करके अपना प्रोडक्शन कम भी करते हैं, फिर भी मतलब एक्सपेक्टेशंस के दौरान जो प्राइस दर ये लोग उम्मीद कर रहे हैं, कच्चे तेल उत्पादन करने वाला जो भी देश है, कार्टल्स कहिए, देश कहिए, जो भी कहिए, उस वक्त वो नहीं पहुंच पाएगा और ये यहाँ पे डाइकोटमी रहेंगे। तो उस दौरान कच्चे तेल का कीमतों में खास करके मैं कुछ ज्यादा तेजी का उम्मीद कर ही नहीं रहा हूँ अगले 2-3 महीने का। And Chanta, knowing very well that the Sensex had crossed 67,000, now that it is 66,356, do you think anybody who wants to buy shares, invest in the markets, I know speculation is a little dicey as far as markets are concerned, but what would you say? Should someone wait for the markets to go down, or is this the right time, or what is your suggestion? Basic principle, there is no right or wrong time to invest or to divest in a market. It all depends on your portfolio of choices, your risk appetite, and a combination of your requirement of money. So, a lot of people sometimes sell stocks because they require money. A lot of people sell stocks because they want to book profits and reallocate their money to somewhere else where they believe they can be another run and all. And a lot of people, even in these markets, if Sensex is at 67,000, it's not that everyone is booking profits if people are still buying, right? So, there is always a greed which drives markets, and let's look at it positively. It's not that greed is something good, but if there was no greed and if there was no speculation happening in the market, there wouldn't be stock markets for the last almost 100 years plus. So what's important to understand is where you hold your position as an investor, and based on that you can take a call. I always think even at 67,000 levels, there are stocks which you can invest in. Now, whether you would like to invest in A, B, C stocks at this point of time is something which depends on what your investment horizon is. There are a lot of independent reports which speak of Sensex doubling up in the next 5 years. So, even at these levels, obviously, it's an attractive buy in that sense. So, as I said, it also depends on the investment horizon. If you're looking for a, investment period for 1 year, maybe you need to take a call and wait a bit for the markets to slow down and settle down a bit from here and pick up stocks up. Right. और अब रुपए के प्रतिशत पर नजर डाल लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 81 रुपए 82 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर्दिवसीय कारोबार में 101.5 पर कारोबार कर रहा था। और अब रुख करते हैं एशियाई और यूरोपीय बाजारों का। चीन द्वारा अपनी धीमी होती अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयासों के चलते एशियाई शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा, लेकिन मिले जुले कंपनी नतीजों से बाजारों में ये तेजी सीमित रही। हांगकांग के हैंगसेंग में 4% का उछाल आया और चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2.1% की तेजी रही। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.6% चढ़ा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.3% लाभ में रहा। हालांकि जापान का निकेई 0.1% के नुकसान में बंद हुआ।
यूरोपीय शेयर बाजारों में भी अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान बढ़त का रुख था। समाचार लिखे जाने तक लंदन के FTSE 100 और फ्रांस का CAC 40 दोनों 0.2% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। जर्मनी का DAX 0.1% लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। The Dow Jones Industrial Average gained yesterday and notching its longest winning streak in 6 years as investors bet on sectors beyond technology in a week filled with earnings reports and a Federal Reserve meeting. The Dow Jones Industrial Average rose 0.5%, the S&P 500 index gained 0.4% and the Nasdaq Composite Index slipped 0.2%. Janta, if the US economy does well, it augurs well for India as well because it will help our IT sector and other exports, wouldn't it? Absolutely, and globally, obviously, there will be a lot of positive sentiment floating around, which is critical for a lot of nations to go in front here. Speaking of US markets, obviously, the labor supply constraints still remain there in terms of job availabilities and all, or that would still be a bother in the horizon. But at this point of time, I think they are all focusing on where FOMC's rates will be, but more than the rates, even while we have digested the fact that there can be a 25 basis point hike tomorrow, what they want to see is the announcement for the next 3 to 6 months, if at all, there is a direction from FOMC on how, the rate pans up. But as I said, more than the rate hike, most of the observers would like to see the tone of the press conference and how it is addressed to and what the governor speaks of in the next 2 to 3 months. जी, जैसा एशिया की बड़ी एक अर्थव्यवस्था चीन की हम बात करें तो वहां की अर्थव्यवस्था आप कहां किस तरफ जाता देख रहे हैं? चीन ने जो अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने भी हाल ही में किन गैंग की जगह वांग यी जो पूर्व विदेश मंत्री थे उनको अपना वित्त मंत्री बनाया है नया, तो ये जो बदलाव देख रहे हैं आप, ये चीन आखिर क्या उसके मन में है, क्या करना चाहता है अर्थव्यवस्था को लेकर? वो देखिए, चीन का मन में क्या है इस वक्त हम स्पेकुलेट बेशक न करना चाहेंगे न करना चाहते हैं। वजह एक ही है, वो ये है कि चाइना हम सबको पता है ग्लोबली एक देश है जो अपना अलग ही रूप बना के अपना अलग ही नीति को दोहराते हैं, चाहे वो डेट्रीमेंटल हो ग्लोबली या चाहे वो कहीं ना कहीं कुछ जिसको पूरी तरह से अपना स्वार्थ के ऊपर फोकस करके पॉलिसीज के ऊपर नीतिगत रूप से उसका आगे दोहराता है। मैं मानता हूँ इस वक्त चाइना में मेन फोकस ये है कि वो चाहते हैं कि एक मैसिव ग्रोथ जो वो खास करके 2000 का दशक में शुरुआत में जो देखे थे उस तरह का ग्रोथ वापस ले आना, लेकिन इस तरह का इकोनॉमी में उतना आसान नहीं है उस तरह का रीजनरेटिव ग्रोथ अचानक जनरेट करके फिर से उसको दोहराया एज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर्स। तो पॉलिटिकली चाइना इज ए हैवी वेट, सबको पता है दुनिया भर में। इकोनॉमिकली ऑल्सो काफी बड़ा हैवी वेट है, लेकिन अलग अलग ग्रुप्स के तौर से अगर आप देखें, चाइना का एज अ ग्रुप इकोनॉमिक ग्रुप अगर है तो चाइना को इकोनॉमिक ग्रुप में विशेष रूप से प्रभाव नहीं डालते। चाइना अकेले बहुत बड़ा है। इस स्थिति में मैं मानता हूँ एज अ नेशन चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा स्लो हो जाए नीतिगत रूप से। Jayanta, sorry, we are a little hard up for time. I'm sorry to interrupt and stop you there. We have to talk about oil now. Well, the global crude oil prices today remain steady. The crude prices hovered near 3-month highs as signs of tighter supplies and pledges by Chinese authorities to shore up the world's second biggest economy lifted sentiment. In intraday trade, Brent crude was trading at $82.70 per barrel. Gold? जी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अगर हम नजर डालें तो आज सोना 59,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में। और जयंता दास, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी बहुमूल्य जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And to end the headlines quickly, in horticulture, production hit highest ever level of over 350 million tons in 2022-23, says Agriculture and Farmers Welfare Minister Narendra Singh Tomar. Pharmaceutical industry turnover of the country increases over 3.44 lakh crore rupees in 2021-22, and domestic stocks close almost flat. And with that, we come to the end of this program. Namaskar. Market Master.